how just a few days after the ED arrested Delhi CM Arvind Kejriwal, now another AAP leader is under ED's lens. Now, the Enforcement Directorate has summoned Delhi Minister Kailash Gahlot for questioning today regarding a money laundering case linked to the now defunct excise policy. Kailash Gahlot has complied, with summons and appeared before the ED. Remember, earlier, AAP leaders Manish Sisodia and Sanjay Singh were apprehended by the ED in connection with the case, and they are currently in judicial custody. समन ना आए अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आगे बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है। All right, that is, of course, the latest reaction that we are picking up as far as Dilip Kumar Pandey of the AAP saying it would be very shocking if the ED doesn't issue any notice. Now, the whole nation is uniting against the dictatorship of the BJP. They've called upon the entire nation to protest against the hooliganism of the BJP and against the arrest of Arvind Kejriwal. But important to note here that my Enforcement Directorate. But what legal team has been suggesting that he will also throw away the line of Andy Gupta, where he will say that the money which was used in the Goa election campaign by the Aam Aadmi Party was only known to the party's national convener Arvind Kejriwal, who is in the police custody of Enforcement Directorate, and the state head, which was actually Atishi Malina, not Deepa Singla. All right, that's Priyank, of course, getting us those details. But Bhavatosh, my colleague, also joins me for the latest. Bhavatosh, good afternoon. Clearly significant development as far as now Kailash Gahlot being summoned. What is the latest that we're picking up as far as what they're looking to establish his role in these cases? Well, as far as Kailash Gahlot is concerned, this is the first time that he has been summoned and he's joined the investigation. Primarily that during the investigation that has been carried out by the Enforcement Directorate for past 18 to 19 months, they have said that he was part of the group of ministers that cleared the excise policy, and that the draft excise policy was actually leaked to the South Group, and then the South Group, which allegedly paid kickbacks of 100 crore rupees, made asked for certain changes, and those changes were also incorporated. Now, Kailash Gahlot's other charge against Kailash Gahlot is that he, in fact, allowed Vijay Nair to stay in his official bungalow, which was illegal, and ED had then written to CBI saying that there should be a criminal case filed in this matter. Now, Kailash Gahlot has never been questioned, despite the fact that he was part of the group of ministers, whereas others, including Manish Sisodia, was questioned. He was later arrested. Satyendra Jain's statement was recorded in the jail. He is also accused by the Enforcement Directorate that he had also changed his mobile phone set on 4 occasions during the relevant period in which the excise policy was in fact discussed. And ED had said that this was actually done deliberately by all the key players in this case, including 13 individuals who changed their mobile handsets on 170 occasions. Now, this questioning is important primarily because of the fact that Arvind Kejriwal presently is in the custody of the Enforcement Directorate. It could be possible that both of them can be confronted with each other, or this statement can be recorded separately. ED also had mentioned that Kailash Gahlot, the group of ministers, was influenced by the South Group, and consequently changes were made. And C. Arvind, when he was called at the residence of Arvind Kejriwal, the draft policy was in fact influenced, and the profit margin for the wholesalers increased from 5% to 12%. That's the reason why today's questioning is very important. Right, for the first time he was questioned.
Right, Pavitosh. I appreciate you getting us all those details and also telling us how essential this is in terms of that first summon coming through and why it's important to the larger context of things. But we leave it at that. But we're also understanding that Saurabh Bharadwaj of the AAP is now addressing a press conference. Let's listen in to what he has to say. रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहाँ छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है। 10 फरवरी 2023 को 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही। All right, we just heard Saurabh Bharadwaj over there essentially talking about what has transpired so far, given what we're seeing with Arvind Kejriwal. Now, just a few days after the ED arrested Delhi CM Arvind Kejriwal, now another AAP leader is under ED's lens. Now, the Enforcement Directorate has summoned Delhi Minister Kailash Gahlot for questioning today regarding a money laundering case linked to the now defunct excise policy. Kailash Gahlot has complied with summons and appeared before the ED. Remember, earlier, AAP leaders Manish Sisodia and Sanjay Singh were apprehended by the ED in connection with the case, and they are currently in judicial custody. समन ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आगे बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है।